Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zia. I welcome all of you from MMK Hub for today's lecture of Anatomy of Neck. I have divided Anatomy of Neck lecture into two lectures. Today we will discuss the first lecture of this series, and next time, very soon, inshallah, we will discuss the second part of the lecture. Lecture outline. In the first lecture, we will discuss the developmental anatomy of the neck, surface anatomy of the neck, regions and triangles of the neck, and then finally fascia and fascial spaces of the neck. And in the second lecture, we will discuss the root of the neck, muscles of the neck, vessels of the neck, nerves of the neck, different lymph node stations in the neck, and very briefly about the parathyroid gland. So, start with the first part of the lecture, developmental anatomy. Skin of the neck developed from the cervical dermatomes satin to 6 cervical segments, while the sternocleidomastoid muscles, strap muscles, and trapezius develop from the cervical myotomes. There are 6 brachial arches which form at the 4th week of period of gestation and has its own principal nerve and vessel. The first pharyngeal arch, brachial arch, form the upper border of the neck. Bones, mandible is formed from the first arch, which is derived from the metals cartilage. As far as muscles of the first brachial arch is concerned, it includes the mylohyoid muscles and the anterior belly of digastric muscle. Traumatic nerve is the mandibular branch of the trigeminal nerve. ट्रिमेटिक नर्व क्या होती है? ये वो नर्व है जो कि ब्रेकियल आर्च को सप्लाई करती है. किसी भी ब्रेकियल आर्च की जो नर्व है उसको हम ट्रिमेटिक नर्व कहते हैं. ट्रिमेटिक नर्व कैन बी प्री ट्रिमेटिक नर्व and the post-traumatic nerve. These are the two portions of the traumatic nerve. And the traumatic nerve of the first brachial arch is derived from the mandibular branch of the trigeminal nerve. Then the first pouch formed ear structures. Then the second brachial arch. The bones which are formed from the second brachial arch include the styloid process, lateral cornu and upper body of the hyoid bones, and muscles include the platysma and posterior belly of digastric and stylohyoid muscle. Nerve supply is from the facial nerve, and the second pouch, brachial pouch, lead to the formation of ear-related structures. Third arch. The bones of the third arch include the greater cornu and inferior body of the hyoid bone. Cartilage include the epiglottis, and the muscles are the stylopharyngeal muscle. Nerve of the third arch is supplied from the glossopharyngeal nerve, and the pouch of the third brachial pouch, ventral aspect gives rise to the formation of thymus, and the posterior aspect gives rise to inferior parathyroid gland. These are the first and second arches. The 4th, 5th, and 6th brachial arch merge to form one unit, while the 5th arch, being completely absorbed, means it didn't give rise to any structure in the fetal life. Third and the 4th arches fuse to form the cervical sinus, and if they persist, they lead to the formation of the cervical sinus in the lower neck between the internal carotid artery and the external carotid artery to the apex of the piriform fossa. 4th and 6th arches, the cartilage of the larynx are formed from the 4th and 6th arches. Muscles formed from the 4th and 6th arches include the cricothyroid, constrictor of the pharynx, intrinsic muscles of the larynx, and the nerve supply from the vagus nerve. And the branches of the vagus nerve which supplies the 4th and 6th arches include the superior laryngeal nerve and the recurrent laryngeal nerve. 4th brachial pouch
lead to the formation of the superior parathyroid gland, while the fifth pouch lead to the ultimobrachial body. Sixth pouch also gives rise to the formation of intrinsic muscles of the larynx. It's a bit complicated developmental anatomy of the pharyngeal arches, but this table is summarizing that first arch, which is also called a mandibular arch, which we already discussed in the previous slide. मसल कंट्रीब्यूशंस क्या होती हैं इसकी, स्केलेटल या बोनी कंट्रीब्यूशंस क्या होती हैं इसकी, नर्व सप्लाई कहाँ से आ रही है, ट्राइजेमिनल नर्व से, और अल्टीरियर सप्लाई इसकी मैक्सिलरी आर्टरी से आ रही है, और जो कि ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। इसी तरह जो सेकंड फ्रेंजियल आर्च है, जिसको हम आयार्ड आर्च भी कहते हैं, इसमें जो मसल्स हैं वो कौन से हैं वो इसमें टेबल में मेंशन है। स्केलेटल कंट्रीब्यूशन इसकी क्या होती है, नर्व इसकी फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है, और आर्टरी जो है वो स्टेपिडियल आर्टरी और आयार्ड आर्टरी है। इसके अलावा थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ आर्च है। फिफ्थ के बारे में हमने बात की है कि फिफ्थ आर्च जो होगा वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो किसी स्ट्रक्चर को की फॉर्मेशन में उसका रोल नहीं है। तो ये टेबल जो है ये इसको समराइज कर रहा है कि फ्रेंजियल आर्चिस से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। इसे मेमोराइज करने का ये तरीका है, तो हमें ये पता हो कि कौन कौन से आर्चिस जो है वो स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट हमेशा 4 लेवल्स पे है। एक मसल की डेवलपमेंट वो करेगा, एक वो बोनी डेवलपमेंट करेगा, एक उसकी अपनी नर्व सप्लाई होगी, और एक उसकी अपनी आर्टिकुलर सप्लाई होगी। तो इन 4 पैरामीटर्स पे हमने इसको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। जो फ्रेंजियल पाउचेस हैं उसमें जो फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच है वो ट्यूबोटिम्पैनिक रिसेस, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है, और जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उसमें होते हैं वो जो ईयर के स्ट्रक्चर्स हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक कैविटी है, मेस्टाइड एट्रियम एंड द ऑडिटरी ट्यूब। बेसिकली जो एक्सटर्नल ईयर के स्ट्रक्चर्स हैं वो फर्स्ट फ्रेंजियल पाउच से बन रहे हैं। जो सेकंड फ्रेंजियल पाउच है वो इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट की सूरत में वो प्रेजेंट करता है, और उसमें जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्रेप्स ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। जो थर्ड है वो उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड्स होते हैं। जो फोर्थ पाउच है उसमें सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और अल्टीमोब्रेंकियल बॉडी है, और जो फिफ्थ पाउच है उसमें इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फोर्थ पाउच। फिफ्थ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फोर्थ में, और वो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड और अल्टीमोब्रेंकियल बॉडी की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। Cover the first portion of the anatomy of the neck. Inshallah, in the next lecture, we will discuss the remaining muscles, vessels, and nerves of the neck. Hopefully, you understand what we have discussed. If there is any query, any question, you can ask.